Hello friends, welcome to our new chapter number 2, solutions. According to Gujarat Board blueprint, this chapter will be asked within 6 marks limit. It may be a MCQ, numerical, or maybe a 2 marks, 3 marks or 4 marks theory. So entire chapter we will learn according to the NCERT textbook. Content to content, topic to topic, we will follow the system of this learning. So let us start with our concept based learning, that is called solutions. Friends, in our normal life we rarely come across the pure substances. हम हमारी दैनिक जीवन में प्योर सब्सटेंस के कांटेक्ट में बहुत कम आते हैं. मतलब उसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ दिस आर द मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस. मतलब हम जो डेली लाइफ में जो कंपाउंड या सब्सटेंसेस का यूज करते हैं वो मिक्सचर होता है. मे बी द मिक्सचर बिकम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 pure substances. Means pure substance is not useful in our daily life. Okay, here you have give some examples. Brass, you have to think that where brass is being used, in a drawer handle, in a door handle, in a cupboard handle, etc, etc, etc. Not only that, brass is a combination of copper and zinc. Pure copper is a metal, or pure zinc is a metal, but brass is a alloy of copper and zinc. German silver is a combination of copper, zinc and nickel. And bronze is a combination of copper and tin. Sn means tin. You can see that, आप देख सकते हो, in entire 3 metals, in entire 3 alloys, copper and zinc are the common constituents, but their proportions, their compositions are different in different alloys. हर एक alloy में उसका जो proportion जो है वो different होता है. That's why the application of brass, German silver and bronze are in a different way. In previous years, our elders, our forefathers were used to take their food in German silver plate. वो अलग बात है कि आज हम थर्मोकोल की डिश में ले रहे हैं. बहुत हमने इवोल्यूशन कर लिया. We are more technocrat. That's why we are using third class material for our food. But in previous sessions, previous years, previous era, they were using German silver plate for drinking water or taking food. Means the application, the property of these 3 alloys are different from each other. Why? Because their compositions are different in a percentage manner that we will learn in another topic also. Not only that, fluoride ion. Fluoride ion means F-1. Fluoride ion is a very essential ion or is a very poisonous ion, which is depends upon its concentration value, means its composition value. If here the 3 examples is given to you, if the proportion of fluoride ion in water is 1 ppm, अगर पानी में ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड आयन की मात्रा अगर 1 ppm है, इट तो होना ही चाहिए. अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम है. अगर इतनी मात्रा पानी में फ्लोराइड आयन की होगी तो इट प्रिवेंट्स टूथ डिके. आपने शायद देखा है बहुत सारे लोगों के टूथ पे ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं. इट शोज दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड आयन. मींस अपने फ्लोराइड टूथपेस्ट में 1 ppm की प्रपोर्शन में फ्लोराइड आयन होना ही चाहिए. बट if the proportion of fluoride ion, compositions of fluoride ion will increase from 1 ppm to 1.5 ppm, it is dangerous for our tooth. Not only that,
उससे भी आगे जाके हम सोचे, इफ द proportion of our fluoride ion will be increased from 1.5 to at higher scale greater than 1.5 ppm, it will be used as a poison, rat poison. चूहों को मारने के लिए जो चॉपस्टिक आती है वो क्या है, सोडियम फ्लोराइड है, NaF, which will be used is a rat poison. तो आप देख सकते हो ppm means parts per million, million means 10 lakh, एक पार्टिकल 10 लाख मॉलिक्यूल में एक पार्टिकल है तो इट इज कॉल्ड 1 ppm. आगे आने वाले टॉपिक में हम ppm के बारे में देखने वाले हैं डिटेल में. तो 1 ppm, 1.1 ppm, 1.5 ppm and less than 1.5 ppm, greater than 1.5 ppm means the proportion of fluoride ion कितना है उससे उसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है वो डिसाइड होगी. मतलब the proportion, the compositions is very much important in our daily life. Intravenous injections, हम जब बीमार होते हैं तब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, we have given intravenous injections and we have been kept on the bottle. Intravenous, तो intravenous जो है उसमें इंजेक्शंस जो है उसको लगाया जाता है. कैसे? पर्टिकुलर सॉल्टी वाटर होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू अपने ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से मैच होता है. उससे ज्यादा अगर कम हो गया तो इंजेक्शंस की जो इफेक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आती है. तो मतलब देयर आर वेरी मच वेरी 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 यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस इन अवर डेली लाइफ, बट not only the application, the concentrations, the compositions of solutions are also important in our daily life. Okay, means in this chapter we are going to learn about the solutions. Solutions are basically mixtures, and mixtures have two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Which type of mixtures is called homogeneous mixtures and which type of mixtures are called heterogeneous mixtures, वो हम जब टॉपिक में आएगा तब उसके बारे में हम सोचेंगे. लेकिन बेसिकली जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो सॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है, द एंटायर सॉल्यूशंस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two components is called solutions. दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए सॉल्यूशंस. When we are talking about the solutions in this chapter, we will talk about the binary solutions. Binary solutions मतलब only two components will be present as a constituent component of the solutions. One is called solute and second one is called solvent, and that's why it is written there solute plus solvent is equal to solutions. अगर कोई भी चीज का सॉल्यूशन बनाना है तो मिनिमम दो प्योर कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए. तो किसको आप सॉल्यूट बोलोगे और किसको आप सॉल्वेंट बोलोगे? The less the proportionate component इन सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है उसको हम बुलाएंगे सॉल्यूट, एंड द हायर प्रोपोर्शनेट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट. जिसमें सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की प्रोपोर्शनल वैल्यू ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे. सपोज मान लो कि हमने पानी में नमक, सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मींस only binary compounds are there. One is sodium chloride and second one is water. Now you think, compared to sodium chloride, the proportion of water is there higher, or compared to water the proportion of sodium chloride is higher? You can think that compared to sodium chloride the proportion of water is higher, means sodium chloride will called as a solute and water will called as a solvent. And the compositions and the combinations, homogeneous mixtures of sodium chloride and water, both are called solutions, and they will form
aqueous solution of sodium chloride. Okay, the types of solutions. तो आप सोचोगे हाँ, तो हमारी डेली लाइफ में कितने सारे ऐसे सॉल्यूशंस है जो हम उसकी एप्लीकेबिलिटी में है, तो आप सोच सकते हो बहुत सारे सॉल्यूशंस है। कई सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। हम आगे आने वाले टॉपिक में स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। तो सॉल्यूशंस का टाइप कौन सा है वो कौन डिसाइड करेगा? बाय विच फैक्टर इट इज डिसाइडेड दैट विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इज देयर। तो रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है जिसका प्रपोर्शन सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है, उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है। अकॉर्डिंग टू दैट फिजिकल स्टेट ऑफ दैट सॉल्वेंट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बीइंग डिसाइडेड। तो कीप इन माइंड दैट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नॉट ओनली दैट, two component that present in the largest quantity is known as solvent. We have discussed earlier it. Largest quantity में जो component होगा उसी को ही solvent बोला जाएगा, and solvent की physical state ही determine करेगी कि solution का type क्या है। ओके, दूसरी बात, ये तो ठीक है कि इस चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, लेकिन आप सोच सकते हो कि कोई एक सॉल्यूशन अगर है आपके पास, वो बाइनरी से ज्यादा कंपोनेंट वाला भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें जिस कंपोनेंट का प्रपोर्शन लार्जेस्ट होगा वो सॉल्वेंट होगा, बाकी के जितने कंपोनेंट होंगे वो सब सॉल्यूट होंगे। मींस कोई एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा, वन एंड ओनली वन कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। अनदर कंपोनेंट्स which have in a less proportion they will known as a solute। तो कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर we will learn about the different aspects, different concept and different theories regarding the solutions. We can see that first of all we will learn the types of the solutions. How many types of solutions are there? In upcoming topic we are going to learn the types of the solutions. In entire journey of this chapter we'll go through these points. Next, concentration of the solutions. हम ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में नमक है, पानी में नमक ज्यादा है, पानी में नमक बहुत ज्यादा है। तो ये तीन स्टेटमेंट लगते एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज लेस, द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज मॉडरेट एंड द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज हायर इन वाटर। मींस द सॉल्यूट कंपोनेंट इज नॉन एज सॉल्यूट, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, विच इज नॉन एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। Simply the concentration is known as a compositions। हर एक सॉल्यूशन जो कंपोजिट होता है तो उसमें कंपोजिशन में किसका कितना पार्टिसिपेशन है उससे उसकी कंपोजिशंस डिसाइड होती है, उससे उसको बोला जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, concentration of the solutions. Next, solubility, its type and Henry's law. We will discuss later. Solubility, what is the meaning of solubility? How Henry explains the solubility concept regarding the solutions. Next topic, vapor pressure of the liquid solutions. When we are using liquid solutions, by default it is presided that the physical state of solvent is liquid. फिर से बोल रहा हूं, if here written is there liquid solutions means the physical type of solution is liquid, and earlier topic says that the type of solution is being decided by the physical state of the solvent. Means here liquid solution is written means the physical state of solvent is liquid.
तो उसमें दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। मींस क्या होगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड लिक्विड, तो फर्स्ट लिक्विड जो लिखा गया है वो सॉल्यूट के लिए है और सेकंड लिक्विड जो लिखा गया है वो सॉल्वेंट के लिए है। सेम एज इन सेकंड टाइप, सॉलिड जो लिखा गया है वो सॉल्यूट के लिए है और जो लिक्विड लिखा गया है वो सॉल्वेंट के लिए है। तो उसमें कैसे वेपर प्रेशर का कंसेप्ट वर्क करता है उसको भी देखना है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, which type of rules and regulations follows by the ideal solutions and which type of solutions are known as a non-ideal solutions, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। Then after colligative properties and determination of molar mass, colligative property क्या है और उससे मोलर मास का रिलेशन क्या है। इस चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला है, बहुत सारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल लेके आने वाला है, बहुत सारे एमसीक्यू लेके आने वाला है। तो हम जब पढ़ेंगे तब उसके कंसेप्ट को कंसीव करने का 100% एफर्ट करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ड्यूरिंग दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यही सेंस में, यही वर्ड में, यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है। खाली अगर आप वेपर प्रेशर लिख के आए तो वो गलत हो जाएगा, इट विल रॉन्ग। तो आपको क्या लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। then after second colligative property is known elevation in boiling point. When you have been asked write down the colligative properties of the solution, तो गलती से भी गलती मत करना कि आप लिख दोगे फर्स्ट वेपर प्रेशर, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट विल 100% रॉन्ग। तो आपको लिखना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो वर्ड में लिखा गया है उसी वर्ड में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को याद रखना है। दिस एंटायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिस्कस्ड इन लेटर ऑन, okay? And then after abnormal molar mass and want Hoff factor, means entire chapter is being categorized into 8 topics. 2.1 to start and then we will finish 2.8. Entire journey will be come with our different concept। और हर एक कंसेप्ट को अलग के समझना है जिससे हम लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, नाउ we will start the types of the solutions. As per our previous discussion, the types of solutions is decided by the physical state of the solvent. So according to the solute and solvent, first of the category first is types of solutions. Look at here, types of solutions, physical state of solute, physical state of solvent and common examples of this type of solutions. First off, look at the solute and solvent physical state. In first 3 sub-category, the physical state of solute is going to be changed. It may be a gas, it may be a liquid, it may be a solid. In solvent, the physical state is continuously in a gaseous phase. Means first 3 types of solutions have solvent in a gaseous state. उसका मतलब if the physical state of solvent is gaseous means our solution is known as gaseous solution. ये मतलब नहीं है कि आपका सॉल्यूट किस स्टेट में है। आपका सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो आपका सॉल्यूशन भी गैसियस हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि गैसियस सॉल्वेंट में सॉल्यूट गैसियस हो सकता है, सॉल्वेंट गैस है तो उसमें सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, अगर आपका सॉल्वेंट गैसियस है तो उसमें सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट में भी चेंज बट द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। इफ इट इज ए गैसियस द एंटायर सॉल्यूशन इज नॉन एज गैसियस सॉल्यूशन। सो देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, gaseous solutions,
liquid solutions and solid solutions. It means the physical state of solvent may be a gas, may be a liquid, may be a solid. According to the physical state of solvent, there are three main types of the solutions. But considering the physical state of solute and solvent, दोनों की physical state को अगर हम consideration में लेंगे तो there are 9 types of the solutions. Each main type have sub 3 type, means gas gas, liquid gas, solid gas, gas liquid, liquid liquid, solid liquid, gas solid, liquid solid, solid solid. तो ये 9 टाइप्स आपको यही सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बार एमसीक्यू इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं. तो गैस प्लस गैस, द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नॉट mixture of O2 and N2 gas. We know that the proportion of dinitrogen gas is in atmosphere is 78% and the proportion of dioxygen gas is 21%. Means our air may be an example of first type. ये याद रखना बच्चों कि एग्जाम में आपको इसकी जगह ये पूछा जा सकता है कि एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपको लिखना है air is a mixture of dinitrogen and dioxygen, means compositions of dioxygen and dinitrogen both are in a gaseous state in which dinitrogen is a solvent and dioxygen is a solute, because the proportion of oxygen in air is 21% and the proportion of dinitrogen in air is 78%. जिसकी लार्जेस्ट प्रोपोर्शन होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो लीस्ट प्रोपोर्शनेट होता है वो सॉल्यूट होता है. तो डाइऑक्सीजन इज सॉल्यूट एंड डाइनाइट्रोजन इज सॉल्वेंट. ओके, सेकंड टाइप लिक्विड सॉल्यूट एंड गैसियस सॉल्वेंट. तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ डाइनाइट्रोजन गैस. व्हेन पेशेंट इज बीइंग एडमिटेड फॉर इन अ ऑपरेशन थिएटर, anesthesia is given to the operation that operative patients, and in that anesthesia this mixture is being used. Chloroform mixed with dinitrogen gas is a example of liquid solute and gaseous solvent. Then after solid solute plus gaseous solvent, तो उसका example होता है camphor in dinitrogen gas. भगवान की जब आरती लगाते हैं तो आरती में लास्ट टाइम हम कपूर डालते हैं, वो कैम्फर डालते हैं. इट इज सब्लाइम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, मींस डायरेक्टली वो सब्लाइम हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ऑफ कैम्फर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड फॉर्म. तो ये जो कैम्फर का डाइनाइट्रोजन के साथ, तो कैम्फर है वो सॉलिड सॉल्यूट है और डाइनाइट्रोजन है वो गैसियस सॉल्वेंट है, वो याद रखना है. Then after our second main type of the solution is liquid solutions. When we are talking about the liquid solutions, the physical state of solvent is liquid and the physical state of solute may change from gaseous to liquid and liquid to solid. So our fourth example is gaseous solute and liquid solvent when oxygen dissolved in water. When patient is on oxygen, such type of mixture is being used in which dioxygen is a solute and water is a solvent. Then after our next title is liquid plus liquid. Ethanol dissolved in water. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि जो नया बंदा होता है पीने वाला वो इथेनॉल कम लेता है और पानी ज्यादा लेता है. बंदा एक बार प्रैक्टिस्ड हो गया, फिर बाद में क्या होता है, इथेनॉल बढ़ जाता है और पानी कम हो जाता है. लेकिन इट्स अ मिक्सचर इन विच इफ द proportion of ethanol is less means it is called solute and the proportion of water is higher means the water is solvent. And last sixth one is solid plus liquid, means glucose dissolved in water. It is very common example to understood the type of solutions. When salt is dissolved in water, when sugar is dissolved in water, when glucose powder is dissolved in water, such type of mixture is a sixth type in which solute is in a solid form and solvent is in a liquid form. Okay, and last third type, main type of our solution is solid solutions, in which when we are talking about the solid solutions means the entire
physical state of solvent is solid, but solute physical state is going to be changed. Our seventh one is gaseous solute plus solid solvent. The solution of hydrogen in palladium. Palladium is nothing but a metal. पैलेडियम मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन का एब्सॉर्बेंस या एडसॉर्बेंस होना, इट इज नथिंग बट इट प्रैक्टिस इज डन इन रिसर्च लैब व्हेन हाइड्रोजन बॉम्ब और कंट्रोल्ड हाइड्रोजन फ्यूजन टैंक इज बीन मेड. तो हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल नहीं है, इसको याद रखना है हमको. देन आफ्टर लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ Na. इतना बच्चों याद रखना, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ एनी मेटल. कोई भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ कंपोजिशन करना, उसका नाम ही उसको एमालगम बोला गया है. जिंक एमालगम, कॉपर एमालगम, सोडियम एमालगम, मैग्नीशियम एमालगम. उसका मतलब क्या हो गया, उसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक मर्क्यूरी फिक्स हो गया. एंड एज वी नो दैट मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल. द फिजिकल स्टेट ऑफ मर्क्यूरी इज लिक्विड. तो eighth one example in which mercury is in a liquid state and the proportion of mercury is less, and that's why it will comes under our eighth type. But the another counter metal is in a solid form. Sodium, magnesium, zinc, copper की मर्क्यूरी के साथ कंपोजिशन जब होती है तो वो 8 टाइप होता है. और 9th टाइप सॉलिड प्लस सॉलिड, बोथ solute and solvent both are in a solid state, means copper dissolved in air. हमने आगे वाली स्लाइड में देखा कि ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, दिस ऑल आर कॉल्ड एलॉयज. तो एंटायर एलॉयज आर कम्स अंडर दिस सेक्शन सॉलिड प्लस सॉलिड. इफ कंडीशन अप्लाई कि ओ कंपोजिशंस में एज ए मेटल मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं है, अगर मर्क्यूरी मेटल आ गया तो वो उसका प्रोपोर्शन लिक्विड होता है, तो चेंज द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन बिकम गोइंग टू बी चेंज. दैट्स व्हाई फ्रेंड्स वी हैव लर्न अबाउट द 9 टाइप्स, 9 सब टाइप्स एंड 3 मेन टाइप्स. तो ये आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस में याद रखना है आपको, आपके नोट्स के अंदर उसको नोट डाउन करके रखना है. ओके फ्रेंड्स, when we will meet in our next video, we learn about the another concept which is called concentration of the solutions, in which 7 या 8 type of concentration we will learn, and we will try to calculate the numericals regarding their concept of concentration, different types of concentration and their units. main आपको याद रखना है. तो I hope you have learned in a better way. Try to conceptualize the concept of this all topic which help you to get success in your board examination. Okay, thank you, bye bye.